Hello and welcome to EduMiles Academy. In today's session, we'll discuss some important newspaper articles from 23rd December 2022. For more study materials and updates, you may also join our WhatsApp group. We'll provide the link of the group in the description below. So this is the list of topics that we'll cover in today's session. Let's start. The first article for the day is about the Samudrayaan Mission. So this basically is a mega ocean mission of the Indian government, which is called as a Samudrayaan Mission, and this is meant to unlock the mysteries in the heart of the deep water. So deep water is supposedly consisting of a huge amount of resources. Mostly we can talk about the marine resources like that of the non-living जो resources है, तो इसी को explore करने के लिए ये जो mission है इसे initiate किया गया है. So according to the Ministry of Earth Sciences, who is the apex ministry which is responsible for carrying out this particular mission. Now the Samudrayaan Mission जो है इसका जो भी outcomes होगा it will be realized by the year 2026. तो basically एक 5 साल का एक mission लिया गया है. इसी के बारे में हम आज बात करेंगे. It can be important for prelims and for mains. It can be important from GSP Poetry, Science and Technology point of view. It has been taken from the Press Information Bureau. This, as you can see in the picture, is that of a vehicle which is basically going to be responsible for carrying out the exploration of the deep ocean. Now the first important thing that you should know about this mission is that it is a manned mission. ठीक है, तो यहाँ पे जो vehicle which will be responsible for carrying out the deep sea exploration, it will also be having man inside it. So the mission is aimed at sending 3 personnel. यहाँ पे 3 personnel will be there at 6,000 meter depth in a vehicle called Matsya 6000. ठीक है, तो ये जो vehicle है इसका नाम बहुत ही important है. You should remember the name. It is Matsya 6000. 6000 basically represents the depth up to which it is going to cover the mission for the exploration of deep sea resources like minerals. The Matsya 6000 vehicle is being designed and developed by NIOT. Now this particular agency is also very important because it is the agency, it is the institute which is responsible for designing and developing this Matsya 6000. So NIOT stands for National Institute of Ocean Technology, and this is in Chennai, which is under the Ministry of Earth Sciences. It is an endurance of 12 hours, so it can be you can say it can be valid for a 12 hours duration on the normal operation. मान लीजिए कि in case of any emergency it will be able to endure till 96 hours for human safety. Now it is India's first unique manned ocean mission, and it is a part of rupees 6,000 crore deep ocean mission. ठीक है, तो यहाँ पे जो बजट है, so this budget has been outlined for this particular mission. ठीक है, so यहाँ पे जो focus is, you understand, as I told you, focus is on non-living marine resources. ठीक है, so ocean, you should understand there are 2 type of resources in the ocean. एक हो गया living, एक हो non-living. तो यहाँ पे हम focus करेंगे non-living marine resources which will be economically beneficial for India. Okay, so with the launch of the unique ocean mission Samudrayaan जो है, तो इसे लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2021 में. ठीक है, अब फाइनली यहाँ पे मिनिस्ट्री ने यहाँ पे जो पार्लियामेंट, जो ऑनगोइंग पार्लियामेंट है, तो यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे जो भी आउटकम है विल बी रियलाइज बाय द ईयर 2026. सो इंडिया यहाँ पे जैसे ही ये जब लॉन्च किया था इन अक्टूबर 2021, तो यू शुड अंडरस्टैंड दैट इंडिया हैड आल्सो जॉइन द वेरी एलिट लीग. यहाँ पे जो क्लब है, सो द क्लब इज एन एलिट क्लब बिकॉज यहाँ पे देखिए, एज आई टोल्ड यू, इंडिया का ये पहला मिशन है, और यहाँ पे दुनिया में आप देखोगे बहुत ऐसे कम ही कंट्रीज है who have initiated such kind of manned or deep ocean mission. तो the countries are USA, Russia, Japan, France, China. तो अब finally यहाँ पे India has also been able, with the Samudrayaan mission, India has also been able to join the elite club of nations. ठीक है, so this यहाँ पे कुछ information दिया गया है. Go through it. It can be important for your upcoming prelims. So now we learn about the significance of this particular mission के बारे में कि what India is going to obtain from this mission. But उसके पहले, as you can see in this picture, this is the instrument or this is the vehicle that is going to carry 3 persons into the deep sea ocean. So this is the Matsya 6000, and here you can see in the picture it is Dr. Jitendra Singh, who is the Minister of State of independent charge of the Ministry of Earth Sciences, and he also holds the Ministry of Science and Technology as well. Okay, so it is Dr. Jitendra Singh. The names are also important. So the manned submersible जो है, as you can see in this picture, will allow scientific personnel to observe and understand unexplored deep sea areas by direct intervention. तो usually देखिए हम यहाँ पे deep ocean के बारे में whenever we want to carry out some kind of research or study, normally हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे मशीन वगैरह यूज करते हैं, या मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ we use technology like this sonar technology. ठीक है, but this is the first time where India is basically trying to directly intervene in this particular area of the deep ocean where the personnel will be sent. ठीक है, और personnel यहाँ पे they
would be scientific personnel who would be observing and also understanding about the deep sea resources के बारे में. It will also boost the central government's vision of new India that highlights the blue economy. So blue economy is that particular part of the contribution of the economy which will be made from the waters, basically from the marine resources. Okay, so as one of the 10 core dimensions of growth. So India has unique maritime position. India, as you should know, India has got a very long coastline of 7517 kilometer long. ठीक है, इसमें से 6100, if I'm not wrong, should be the coastline of mainland India, और बाकी जो remaining है, it is including that of the Andaman Nicobar Islands and also the Lakshadweep group of islands, which is home to 9 coastal states. यहाँ पे for example मान लीजिए महाराष्ट्र, then Goa, then West Bengal, Odisha, Karnataka. So ये सारा states मिलकर there are 9 coastal states, and there are 1382 islands which are basically a part of the Andaman and Nicobar and also the Lakshadweep group of islands of the Arabian Sea. For India, with its 3 sides surrounded by the ocean, so Indian Peninsula, if you remember on the map, India is surrounded by water on 3 sides. अगर आप देखोगे left में, you'll find the Arabian Sea. If you find on the right side, you'll find the Bay of Bengal, or south में you'll find the Indian Ocean. And around 30% of India's यहाँ पे जो nation's population है, it lives in the coastal areas and coastal regions. And because they live in the coastal regions, obvious सा बात है यहाँ पे जो water है, it is going to play a very significant role in the livelihood of these people. It supports fisheries and aquaculture, tourism, livelihood and blue trade. अब इसी समुद्रयान के बारे में, which was initially known as the Deep Ocean Mission है, it was approved in June 2021 by the Ministry of Earth Sciences. अभी के टाइम में ये न्यूज में इसीलिए है because it has been discussed in the parliament. ठीक है, but you should know कि ये लास्ट ईयर ही इसे इनिशिएट कर दिया गया था और अप्रूवल जून 2021 में हुआ था by the Ministry of Earth Sciences. Ministry is very important, it will be asked in examination. It aims to explore the deep ocean for resource, then develop deep sea technologies for sustainable use of ocean resources and also support the blue economy initiatives of the Indian government. ठीक है, अब मैंने बताया था आपको the components of the blue economy initiatives के बारे में, क्या क्या what basically forms a part of the blue economy of India. The cost of the mission has been estimated at rupees 4077 crore over a 5-year period. तो यहाँ पर जो initial period लिया गया, it is 5-year period, और इस 5 year में इसीलिए यहाँ पे मिनिस्टर ने कहा है कि the purpose, the objective of the mission will be realized by 2026. बिकॉज ये लॉन्च किया गया था 2021 में. इसी टॉपिक के बेसिस पर एक प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट द समर्थ स्कीम के बारे में. अब ये जो समर्थ स्कीम है, इट इज अबाउट कैपेसिटी बिल्डिंग, इट इज अबाउट स्किल डेवलपमेंट इन द टेक्सटाइल सेक्टर में. ठीक है, सो अंडर द समर्थ स्कीम ऑफ टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, अगेन इंपॉर्टेंट, मोर देन 13,235 आर्टिसंस हैव बीन ट्रेन्ड इन द लास्ट 3 years. तो इसी के बारे में हम बात करेंगे, व्हिच कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर आवर प्रीलिम्स एंड आल्सो फ्रॉम मेंस. इट कैन बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो. सो अबाउट द समर्थ स्कीम के बारे में, तो समर्थ जो एक स्कीम लाया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, तो यू शुड नो इट इज अ स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर. ठीक है, ये सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट इज मेंट फॉर स्किल डेवलपमेंट. जहां पे अब मान लीजिए जो यहाँ पे यूथ है तो उनको स्किल दिया जाएगा रिगार्डिंग द प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल इन इंडिया. इट इज अ फ्लैगशिप स्किल डेवलपमेंट स्कीम अप्रूव्ड इन कंटिन्यूएशन टू द इंटीग्रेटेड स्किल डेवलपमेंट स्कीम. तो आप देखोगे यहाँ पे जो 2014 में जो यहाँ पे गवर्नमेंट द बीजेपी गवर्नमेंट came to power. So before that the scheme जो है इसे कहा जाता था इंटीग्रेटेड स्किल डेवलपमेंट स्कीम. ठीक है, और उसके पहले ये जो इंटीग्रेटेड स्किल डेवलपमेंट स्कीम है, दैट इज ISDS, तो इट बेसिकली फॉर्म द पार्ट ऑफ द 12 5-year प्लान. ठीक है, तो 12 5-year प्लान which was about which was meant for the period from 2012 to 2017. तो ये जो पीरियड था इसके लिए इट वाज meant, but then again 14 में आके ये जो 5-year प्लान है इसमें खत्म कर दिया गया था. साथ ही साथ यहाँ पे जो प्लानिंग कमीशन है इसे रिप्लेस करके एक नया बॉडी यहाँ पे फॉर्म किया गया था, दैट इज द नीति आयोग. ठीक है, बट देन अगेन 12 5-year प्लान का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा क्या था, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट था इंटीग्रेटेड स्किल डेवलपमेंट स्कीम, एंड इसी का कंटिन्यूएशन को अभी कहा गया है समर्थ. ठीक है, दिस नेम इज इंपॉर्टेंट. द ऑफिस ऑफ द डेवलपमेंट कमिश्नर, यू शुड नो दिस ऑफिस ऑफ द डेवलपमेंट कमिश्नर इज ऑफ द हैंडीक्राफ्ट. इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ओनली. ठीक है, नाउ इट इज इंप्लीमेंटिंग द समर्थ टू प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग टू हैंडीक्राफ्ट आर्टिसंस अंडर द कंपोनेंट स्किल डेवलपमेंट इन हैंडीक्राफ्ट सेक्टर ऑफ द नेशनल हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम. ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, तो प्रोवाइड द डिमांड ड्रिवन प्लेसमेंट ओरिएंटेड स्किलिंग. अब देखिए, माना जाता है कि इंडिया में जो एक मीनेस है ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द अनस्किल्ड लेबर फोर्स ऑफ इंडिया. तो इसीलिए यहाँ पे टू एनरिच द लेबर फोर्स, टू एनरिच द वर्क पावर ऑफ इंडिया, यहाँ पे लोगों को, यहाँ पे यूथ को आप कह सकते हो कि यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग या स्किल डेवलप किया गया है. ठीक है, सो दैट टू प्रोवाइड द डिमांड ड्रिवन देन प्लेसमेंट ओरिएंटेड स्किलिंग प्रोग्राम्स टू इंसेंटिवाइज द एफर्ट्स ऑफ द इंडस्ट्री इन क्रिएटिंग जॉब. सो दैट यू कैन से यहाँ पे जो
you can say जो ये textile industry है, it is also been capable to create and to give employment to a number of youth in the country. In the organized textile and also related sector to promote skilling and skilling upgradation in the traditional sectors through respective sectoral division and organization of the Ministry of Textile, and also to provide livelihood to all sections of the society across the country. Okay, so this is about the SAMARTH scheme here. Now you should also have some idea about it status of the textile sector in India, because you can be asked any question about the textile sector related to the GS paper 3 or also in the essay part. So इसीलिए you should be aware about the status, about the condition, about the scenario of the textile sector in India. Let's look at it. So textile and the garment industry जो है, it is a labor intensive industry which basically employs a huge amount of workforce in India. It employs 45 million people in India. ठीक है, तो आपको शायद पता होगा कि एग्रीकल्चर जो है, it is the primary sector of the Indian economy. ठीक है, अब ये जो प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी है, यहाँ पे more than 60 to 70% of the people are employed in India in agriculture only. ठीक है, so this is the reason you will find यहाँ पे जो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, it is just second only to agriculture in terms of employment. ठीक है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर के बाद ही it is textile and garment industry. India's textile sector is one of the oldest industries in Indian economy and is a storehouse and carrier of traditional skills, heritage and culture. तो यहाँ पे अगर हम ट्रेडिशनल टेक्सटाइल के बारे में बात करेंगे, यू शुड नो अबाउट सर्टेन थिंग्स लाइक खादी के बारे में. ठीक है, एंड ऑल्सो अबाउट द ट्रेडिशनल टेक्सटाइल लाइक यू कैन से अबाउट द बनारसी सिल्क के बारे में, अबाउट द चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी के बारे में. चिकनकारी जो है इट बिलोंग्स टू द लखनऊ उत्तर प्रदेश एंड बनारसी जो है इट बिलोंग्स टू वाराणसी ऑफ उत्तर प्रदेश. एंड कलमकारी का अगर हम बात करेंगे इट बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश. ठीक है, सो दिस आर सम ऑफ द ट्रेडिशनल थिंग्स दैट is represented by the textile sector of India. It can be divided into two segments. देखिए, एक हो गया organized और दूसरा हो गया unorganized. Organized यहाँ पे देखिए, the unorganized sector is small scale and uses traditional tools and methods. It consists of handloom, handicrafts, sericulture, etc. And if we talk about the organized sector के बारे में, which represents the formal sector of the textile industry. So the organized sector, it uses modern machinery and techniques and consists of the spinning, apparel and garment segment. Now let's look at some of the initiatives of the Indian government with respect to the textile sector in India. तो फर्स्ट यहाँ पे बताया गया है about the scheme for integrated textile park. तो इसे लॉन्च किया गया था 2005 में, which aims to provide the industry with world-class state-of-the-art infrastructure facilities for setting up their textile unit. Next, we can talk about the PowerTex India. So PowerTex India scheme comprises new research and development in power loom. Power loom, you should know, it is a loom which is operated by mechanical or electrical power, and also new markets, branding, subsidies, welfare schemes for the workers. Then यहाँ पे बताया गया about the silk समग्र scheme. अब इसके बारे में यहाँ पे important चीज यही है, it is basically meant to curb our foreign dependence regarding the textile industry. So it focuses on improving the quality and productivity of domestic silk so that यहाँ पे जो foreign dependence है उसे reduce किया जा सके by reducing the country's dependence on imported silk. ठीक है, तो देखिए जो टॉप पार्टनर्स है, जो पार्टनर कंट्रीज है फ्रॉम विच इंडिया इंपोर्ट्स टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग, दे बेसिकली इंक्लूड चाइना, बांग्लादेश, देन यूएसए, वियतनाम एंड इंडोनेशिया. ठीक है, तो इसी को कर्व करने के लिए ये सिल्क समग्र स्कीम लाया गया है. एंड ऑल्सो द अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम, इट इज अ क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल इंसेंटिव स्कीम है, जहाँ पे सब्सिडी है, जहाँ पे आप कह सकते हो कि फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल यहाँ पे यू कैन से यू विल बी प्रोवाइडेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट और यू विल बी प्रोवाइडेड क्रेडिट. ठीक है, which will be meant for the upgradation and modernization of the textile industry. And also about the National Handloom Day. So India हर साल इसे ऑब्जर्व करता है on 7th of August to mark the importance of the handloom weaving community in India. Every year, August 7th जो है is observed as the National Handloom Day in India to highlight the contribution of the handloom industry. And also to raise awareness among the people about the importance and the significance of the textile in India. ठीक है, और देखिए जो समर्थ स्कीम है, इसी के रिगार्डिंग एक और चीज इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा कि ये समर्थ इज अनादर समर्थ स्कीम. ठीक है, तो ये जो अनादर है इट वाज बेसिकली बाय द इट इज मेंट फॉर द वुमेन. ठीक है, सो ऑन द ओकेजन ऑफ द इंटरनेशनल वुमेन्स डे ऑफ द करंट ईयर ओनली, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ द एमएसएमई, ठीक है, एमएसएमई का जो मिनिस्टर है, तो उन्होंने लॉन्च किया था एक स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन ड्राइव जिसे कहा गया है समर्थ. लेकिन ये जो समर्थ है इट इज फॉर एंटरप्रेन्योरशिप अमंग वुमेन ओनली. ठीक है, और यहाँ पे जो हम समर्थ के बारे में बात करते हैं तो दिस इज अबाउट द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल. डिफरेंस है, एक हो गया मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, एक हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई. और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल जो है जो समर्थ है इट इज बेसिकली मेंट फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्किल डेवलपमेंट. और ये जो समर्थ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द एमएसएमई मिनिस्ट्री का, नाउ इट इज ओनली अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप अमंग द वुमेन के बारे में. ठीक है, सो इसी टॉपिक के बेसिस पर एक प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, काइंडली आंसर इन द कमेंट सेक्शन.
So the next article is about the state of Arunachal Pradesh, where the CM has claimed that Arunachal records lowest crime rates against women and children as well, which is a very positive news for the state. It can be important for our prelims, and also we can use the information in our essays and also in our mains answer writing जब भी हम यहाँ पे करेंगे regarding the women and children. So it can be important for our GS paper to issues faced by women and children point of view, and it has been taken from the Arunachal Times. तो यहाँ पे देखिए करंट कंटेक्स्ट बताया गया है that the CM Pema Khandu has said that Arunachal Pradesh records one of the lowest rate of crimes against women and children in India. So he has said during a public meeting after laying the foundation stone यहाँ पे lay किया गया है of the state's first central jail turned correctional center. ठीक है, तो यहाँ पे जेल से इंपॉर्टेंट माना जाता है कि यहाँ पे जो क्राइम, यहाँ पे जो क्रिमिनल्स है उनको करेक्ट करना या उनका जो मेंटेलिटी है उसे इंप्रूव करना इज मोर इंपॉर्टेंट. तो इसीलिए यहाँ पे सेटअप किया गया है एक सेंट्रल जेल टर्न करेक्शनल सेंटर इन पपुमपारा डिस्ट्रिक्ट. सो इन 2021 चार्जशीट जो है इन अरुणाचल हैव बीन फाइल्ड इन 87.09% अरेस्ट, व्हिच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन बिकॉज यू शुड अंडरस्टैंड कि यहाँ पे इतना ज्यादा जब चार्जशीट जब फाइल होते हैं इतना सारा केसेस में, तो सच हाई परसेंटेज ऑफ कन्विक्शन एंश्योर्स दैट नो आर्बिट्ररी अरेस्ट ऑफ इनोसेंट्स आर मेड. ठीक है, तो बोथ दिस अरेस्ट आर, यू कैन से बोथ दिस आर टेस्टामेंट टू द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज एंड अप्रोच टुवर्ड्स स्पीडी एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एंड फाइलिंग ऑफ चार्जशीट इज in time to ensure that no guilty is let free and also that no innocent suffers needlessly. ठीक है, सो द सीएम हैज ऑल्सो मेंशन सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे. द प्रिजनर्स जो है ना, प्रिजनर्स को माना जाता है कि दे हैव ऑलवेज बीन ट्रीटेड एज अ बर्डन ऑन द सोसाइटी फॉर, आप यहाँ पे कह सकते हो बिकॉज इवन आफ्टर द रिलीज दे आर ट्रीटेड एज डिफरेंट ओनली, है कि नहीं. सो व्हाइल एंश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ एवरी प्रिजनर, द गवर्नमेंट इज मेकिंग नाउ एफर्ट्स टू एडुकेट प्रिजनर्स. ठीक है, which is very important to correct their mentality, to change their mentality, right? To change their outlook, involve them in skill development activities, and also to link them to employment enhancement opportunities, so that even after the release they can be employed in place of dignity, so that they will be able to earn the livelihood, right? So that they can earn a livelihood and also live a life with dignity after their release. So topic के basis पर एक please practice question है, please answer in the comment section. The next article is about the National Mathematics Day, which is observed by the DNGC. There is the Dera Natung Government College. Now this National Mathematics Day जो है, you should know the date. It is observed on 22nd of December every year. It is important for our prelims and also from mains. Not that important, but then again it has been taken from the Arunachal Times. So it is very important. There is 22nd December. So National Mathematics Day has been celebrated every year on 22nd December to mark the birth anniversary of Srinivas Ramanujan. ठीक है, now he is believed one of the best mathematician of India, और not just of India but of the world actually. ठीक है, तो इसीलिए इन्हीं का जो बर्थडे है इसे ऑब्जर्व करने के लिए we celebrate the National Mathematics Day. So on the 125th birth anniversary, तो you should know कि ये जो birth anniversary है तो इस बार जो it is 135th. ठीक है, लेकिन ये जो डे है इसे ऑब्जर्व किया गया है फ्रॉम 125, मतलब ये 10 साल से इसे सेलिब्रेट किया गया है, लाइक फ्रॉम द पास्ट 10 years. द नेशनल मैथमेटिक्स डे was announced by the then Indian Prime Minister Manmohan Singh in 2012. ठीक है, सो इस बार हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें 10th, you can say National Mathematics Day. The day is celebrated annually with the aim to make people aware of the importance of mathematics in life. You know, कहा जाता है कि अगर आप मैथ्स में अच्छे हो तो आप सब सब्जेक्ट में अच्छे हो, है कि नहीं. तो इसीलिए to make the people aware of the importance of mathematics and also advancement and development of which are made in the field of mathematics. Now, if we look at the life of Srinivas Ramanujan, then he was born in 22nd of December 1887 in Erode in Tamil Nadu. Okay. In 1903, he secured a scholarship to the University of Madras but lost in the following year because he neglected all other subjects in pursuit of mathematics. Okay. So, because माना जाता है कि he was excellent in mathematics, but because he did not give too much of importance to the other subject, so he lost his scholarship. In 1911, Ramanujan published the first of his papers in the Journal of the Indian Mathematical Society. It is important. In 1913 में he began a correspondence with the British mathematician Godfrey H. Hardy, which led to a special scholarship from the University of Madras से दिया गया था and a grant from the Trinity College, Cambridge. In 1918 he was elected to the Royal Society of London. Ramanujan was one of the youngest members of the Britain's Royal Society and the first Indian to be elected a fellow of Trinity College, Cambridge University. Okay, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे about his contributions, about his achievements in the field of mathematics, तो formula and equation के respect में हम बात कर सकते हैं about
अब देखिए रामानुजन has compiled around 3900 results consisting of equations and identities, ठीक है. और you must have heard about the pi, ठीक है, which is basically हम मानते हैं कि as a fraction it is 22/7. So one of the most treasured findings was his infinite series for pi. तो pi के लिए उन्होंने फाइंड किया था infinite series. He gave several formulas to calculate the digits of pi in many unconventional ways. तो यूजुअली हम मैथ्स में यूज करते हैं 3.14, बट एक्चुअली जो वैल्यू है वो काफी लंबा है, तो उन्होंने फाइंड किया था एक इनफिनाइट सीरीज फॉर इट. एंड गेम थ्योरी के बारे में, सो गेम थ्योरी इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच इज यूज्ड प्राइमरीली इन इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड साइकोलॉजी एज वेल. तो उन्होंने डिस्कवर किया था एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ न्यू आइडियाज टू सॉल्व मेनी चैलेंजिंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स व्हिच गिव अ सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस टू द डेवलपमेंट ऑफ गेम थ्योरी, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ मैथ्स एंड अदर फील्ड एज वेल. His contribution to game theory is purely based on intuition and natural talent and remains unrivaled to this day. Ramanujan का अगर हम यहाँ पे बुक के बारे में बात करेंगे तो one of the Ramanujan's notebooks was discovered by George Andrews in 1976 in the library at Trinity College. So ये जो नोटबुक ये डिस्कवर किया गया था, उसी से एक बुक भी बाद में कंपाइल किया गया था. तो अगर हम यहाँ पे रामानुजन नंबर के बारे में बात करेंगे which can be important for our prelims, the number is 1729, ठीक है. तो ये जो नंबर है 1729, it is known as Ramanujan number because it is important in two respects, ठीक है. अब ये देखिए एक ऐसा नंबर है जिसे कहा जाता है स्मॉलेस्ट number which can be expressed as the sum of two different cubes in two different ways, ठीक है. तो देखिए एक तरीके से यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो 10 और 9 है, अब इनका जो क्यूब है, 10 का क्यूब है आपका 1000 और 9 का क्यूब है 729. सो इफ यू एड बोथ द नंबर्स तो इन दोनों क्यूब का सम है 1729. एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे 12 और 1, तो 12 का क्यूब हो गया 1728 एंड 1 का क्यूब ऑब्वियसली 1 ही है, तो इन दोनों का सम भी 1729 ही है. तो ये जो आप कह सकते हो दिस पैटर्न वाज बेसिकली डिस्कवर्ड बाय रामानुजन ओनली. और इसी टॉपिक के बेसिस पर प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन. नाउ ये सारा क्वेश्चन मैंने पूछा था इन द लास्ट वीडियो. नाउ लेट्स लुक एट द आंसर्स. सो द आंसर्स फॉर द क्वेश्चंस आर, so the schedule which is concerned with the special provisions for the administrative and control of the schedule areas in several states, it is the 5th schedule of the Indian Constitution. And the concept of the carbon credit originated from the Kyoto Protocol. You should know it, very important. Which of the following is the 5th submarine? It is INS Vagir. So for now, that was all from our side for this session. Thank you so much for joining in. We'll meet the next one. Bye bye and take care.